इनोसेंट गर्ल, उसके फैमिली, हैप्पी फैमिली, इनोसेंट फैमिली, सडनली उसके फैमिली के ऑल मेंबर्स को मार देता है। देन उसके बाद वो लड़की नक्सलाइट बन जाता है। फिर उसके बाद उसका लाइफ का चेंज, उसके बाद क्या होता है वो ये मेरा कैरेक्टर का दहनम पे देखने मिलेगा। थैंक यू सो मच ऑल टीम को, थैंक यू एमएक्स प्लेयर को कि दहनम जैसे सब्जेक्ट पे मैंने कैरेक्टर प्ले किया है। आई थिंक आई एम सो लकी एंड वेरी गुड सीरीज एक्चुअली, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था, फर्स्ट टाइम मैंने अपने करियर में मैंने क्राई किया था, मैंने रोया। आई थिंक मैंने कोई और प्रोजेक्ट में इतना क्राई नहीं किया। सो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है धानम। थैंक यू एंड 14 अप्रैल रिलीज एमएक्स प्लेयर में धानम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और आप सब लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, सो थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि दैट नाउ वी ऑल आर हियर, आई थिंक द बिगेस्ट क्रेडिट गोज टू रामू सर एंड मंजू सर टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट, टू मेक इट हैपन फॉर अस. And most importantly, like we are sitting in AC right now, we are enjoying, bragging about ourselves, or saying everything, we are praising everything. But the real hard work, I think the whole team, the spot boys, the makeup team, the camera team, my direction team, I think 40-45 degree temperature, sir, it was very hot, boiling hot. So I remember all of us shooting there, and some of the DOPs are literally like, they're taking the shot like this. If they'll fall, they'll die. And I was like so worried about it. So the biggest credit goes to all of them. Yeah, my character name is Hari, and the story is all about revenge, and more than revenge, it's about taking a stand for what is right. एक किसी इंसान को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है बुरे से लड़ने के लिए, आपको बुरा बनना पड़ता है। एक इंसान को अपना सब कुछ खोना पड़ता है, अपनी सच्चाई खोनी पड़ती है। आई थिंक इट्स अबाउट दैट। सो थैंक यू एवरीवन, आई थैंक यू माय टीम जो यहाँ नहीं है, और सर आप सब लोगों को एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इन्होंने ऑडिशन नहीं लिया मेरा, दे जस्ट कॉल्ड मी, दे सेड वी हैव फेथ ऑन यू, यू जस्ट कम एंड यू परफॉर्म, and somehow the magic happened, and now it's in front of you. And thank you MX Player for giving us the platform to showcase our talent and our subject. And मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में भी you will keep the same faith on us, sir, है ना? So thank you very much MX team, thank you very much Ramu sir, thank you all of you. Okay, lots of love. Thank you. So namaskaram, namaste, hello naru. So सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा RGV सर को। ही इज़ लाइक गॉडफादर फॉर मी, एंड ही इज़ हैविंग लाइक जो फेथ उनका मेरे ऊपर है। और मैंने सर के साथ जब डी कंपनी में काम किया था, उसके बाद फिर अभी MX ओरिजिनल सीरीज दहानम आ रही है। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड मंजू सर, थैंक यू सो मच। मैंने उनके जितना कूल डायरेक्टर नहीं देखा है। मतलब हमने 2 से 3 महीना, 3-3.5 महीना हमने वहाँ पे काम किया है, और एक्सट्रीम कंडीशंस में काम किया है, लेकिन एक दिन भी, एक समय ऐसा नहीं आया कि कुछ भी ऐसा कुछ हुआ हो कि थोड़ा लाइक हेक्टिक की वजह से या कहीं भी, मतलब वो कूलनेस जो थी हमारे सेट पे वो हमेशा कायम बनी रही। और बहुत मज़ा आया हमें उस पूरी टीम के साथ काम करके। हमारे पूरा सपोर्ट जो था, पूरी टीम का सपोर्ट जो था, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा MX टीम को। थैंक यू सो मच MX टीम। और इट्स रिलीजिंग ऑन 14, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। नाउ मैं अपने कैरेक्टर के बारे में अगर बताना चाहूँ तो जैसा कि आपने एवीज में देखा, ट्रेलर में देखा है कि ये कैरेक्टर बहुत ही ब्रूटल है, बहुत ही क्रूअल है। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस कैरेक्टर को आप सभी लोग पसंद करेंगे, ये लोगों को बहुत पसंद आएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स। Love crime dramas. Okay. In fact, someone suggested that if you didn't become a director, you'll probably become a criminal. But that's not true, because see, I think I consider myself a naturalist who studies criminals so that to adapt them
to a story of a certain thing. So I think the greatness about a series compared to a film is the series will give you a longer time to explore the characters and explore the story in terms of its progression, in terms of it makes it much more realistic, the experience, instead of having a 2-hour structure of a feature film. That's what excited me. So when I first narrated the story of Dhahanam to MX, the creative heads, so Karan and Mansi Shivas and Farah, obviously they are excited. I mean, though it is kind of based loosely on events and things which happened at various times, but eventually driven stories at the end of the day more or less will have the same trajectory. The characters will change, the regions will change, and probably the incidents will change. But more or less the soul or the backbone, I think, will be intact, which is what... So Dhahanam, I would like to believe, is probably first of its kind in terms of telling a story of revenge. I mean, it is about crime, no doubt, but crime is a legal word, you know. But many times crime can come out of a certain moral and a kind of an unjust, because if you're fighting the establishment, it's called a crime, you know. But if the fighting against the establishment is for a just cause, so there the line gets blurred, whether it's a crime or a necessity or a fight for something what you believe in, you know. So to that extent, I think all the characters in Dhahanam are very grey in their nature. So you really can't say who's bad and who's good, because all of them have their own very valid reasons, which is what I think realistic film should be about. The script or the director or the writer cannot take sides with the characters, calling someone good or someone bad. That's my whole point. So now coming to the actors, literally, so because of the COVID situations, lots of times things had to change in the last minute because of availability, and some shutdowns happening of various places where the shooting was intended to take place. But see, I have an excellent tuning with Manju, because Manju and me, we've been working with each other for a very long time. So he's got a certain uncanny sense of understanding what exactly I want, and many times he probably does something else, what I didn't think, but invariably it will be better. So I thought for a series like Dhahanam, he's the most perfect choice, because he knows the region where the shoot took place very well, because he belongs to that, and about the locations or about the body language and the ambience which is required for a film, for a series like this to be created. And on that tuning, I remember first when there was a certain time when he sent me Abhishek 7 or 8 pictures on WhatsApp as a possible choice for the role of what he's playing. And I just saw the first picture and I sent a message, taken. You know, I didn't even see the other 7 pictures because the point is, you will see in one picture what is supposed to be seen. It's not like you have to have a huge this thing. And he's done a fantastic job, like you can already see a sense of that in the trailer. And Abhilash, I believe, is one of the most strongest screen presence I've seen on screen, apart from what else we worked with him, and also the pictures he normally takes, and when I first got them from a casting director. And and he looks really menacing on screen, and in real life he's such a sweetheart, so I